Hello everyone, welcome to our next lecture for pre-foundation. Now friends, I have already told you the relevance of these pre-foundation classes, and from today onward we are going to focus on one or the other topic in every class in this pre-foundation series. Now you all know the importance, so let's begin and look at some of the topics. Like I told you that we'll be discussing 2 or 3 topics from the list that I have given you in the last class. Okay, so friends, the first session all of you must have seen, जहाँ पे मैंने आपको orientation दिया था about different topics, different type of questions, different areas and the different examinations that you'll have to deal with. Now in today's lecture we are going to take on the first 2 topics of this very big list of the topics from logical reasoning. So let's select the 2 topics, arrangements and distributions. This is one thing, and number and letter series. So ज़्यादा time waste नहीं करेंगे and we'll directly jump on to the basics of arrangements and distributions, followed by some questions, and then basics of number and letter series, followed by some questions, right? So let's begin with arrangements. Now, if you were a part of the last session that I've taken on pre-foundation, in which I have told you that the arrangements can be of 2 different types. Okay, now the 2 different types of arrangements can be a linear arrangement and a non-linear or circular arrangements. Right? Now today we are going to focus on linear arrangements. We'll understand the basics about a linear arrangement, the different rules and regulations that we follow while arranging some people along a linear arrangement, right? Then in some other session we'll be talking about circular arrangements. Now since we are focusing on our basics, so we'll start with a very basic topic, that is linear arrangements. Okay, now linear arrangement में होता क्या है? Now linear arrangement में, let's say you are given a set of people A, B, C, D, E, F, does not matter right now how many people are given, ठीक है? So let's say you are given a set of people, and using some conditions that are given, using some information that will be given to you in the question, you will have to arrange all these things, all these people or all these objects in a proper linear manner. एक order में arrange करना है. Once you have arranged them, then the questions that will be followed can be easily answered in a matter of minutes. Okay, तो अब इनको arrange करने के लिए different type of statements will be given, and आपको उन statements को properly understand करना है, interpret करना है उनका meaning, and then following all these conditions you will have to make the arrangement. So we'll look at some of these statements that may disturb you, right? अगर उनका proper meaning नहीं पता आपको. Okay, so let's start with each and every statement one by one. Okay, so statement number 1, let's say you are given that A and B are 2 people. A is sitting next to B. Okay, A is sitting next to B. अब most of the students interpret it like कि जहां पे A बैठा है उसकी next chair पे B बैठा है. Now next from which direction? Left or right? Right? So left or right? So before arranging any set of people, first of all you have to be very clear about selecting left or right. Okay? तो अगर आपको बोला हुआ है that all these people are sitting and they are facing the same direction, तो आपको क्या करना है? Let's say if these are the 6 chairs, okay, so you can assume that all these people who are sitting are facing inside, अंदर की तरफ face कर रहे हैं. क्यों? ऐसा क्यों? Because if anybody is facing inside, अगर अंदर की तरफ face कर रहा है तो उसका left ये होगा और right ये होगा. So the left of this person will be my left and the right of this person will be my right. या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका राइट इसका राइट होगा, आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा. ऑन दी अदर हैंड अगर आप अज्यूम करोगे कि ये लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, राइट, सो इनका लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा एंड इनका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा, विच विल क्रिएट अननेसेसरली कंफ्यूजन. ओके, सो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे?
हम अज्यूम करेंगे कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, या ऊपर की तरफ फेस करें, ऊपर की तरफ फेस करेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, राइट, ठीक है। सो लेफ्ट और राइट सेलेक्ट हो गया ना। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो लेट्स से अगर ए यहां पे बैठा है एंड यू आर गिवन दैट ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, नेक्स्ट टू मींस साथ में, तो बी इस चेयर पे या फिर इस चेयर पे, इन दोनों में से किसी भी एक चेयर पे हो सकता है इफ गिवन दैट ए इज सिटिंग एट दिस चेयर। ओके, सो नेक्स्ट का मतलब होता है एडजेसेंट। ओके, सो इमीडिएट नेबर, so some of the different ways in which it can be given is adjacent or immediate neighbor, right? So these are different ways in which the same thing can be given. A is sitting next to B, A is the immediate neighbor of B, A is adjacent to B, right? So A की meaning है in which A and B will sit together. अब इनमें से कोई भी लेफ्ट में हो सकता है, कोई भी राइट में हो सकता है. Then some more information will be required to put B at its exact place. Okay, so this is one of the statements. Now let's look at the next statement. A is sitting 3 places away from B. A is sitting 3 places away from B. So let's make some chairs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 randomly. ठीक है? And B is sitting at this chair. B is sitting at this chair. I'll number these chairs 1, 2, 3, 4. So now all of you tell me what will be the place, what will be the number of the chair where A is sitting. A कहां पे बैठा हुआ है? So A कहां पे बैठ सकता है? A is 3 places away from B. So 3 places away का मतलब क्या होगा? It can be on the first of all left hand side or right hand side because left right mention नहीं किया हुआ. So 3 places away, अगर मैं left की तरफ जाता हूं, so 1 place away, 2 places away, and this is 3 places away. So A may be sitting at this chair, or on the right hand side 1, 2 and 3. So A may be sitting at this chair, which is chair number 9. So there can be 2 possibilities once again depending upon the left or right. So if it is on the left, then third chair, chair number 3, and if it is on the right hand side, it will be chair number 9. 3 places away means there are 2 persons sitting between these 2 people, or sitting at the third chair starting from B. B से start करके third chair पे A बैठा हुआ है. Okay, so these are some basic meanings of the basic statements that you'll have to interpret. Okay, now next statement. Statement number 3. A is sitting between B and C. Now A is sitting between B and C. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ओके, so let's say these are 9 chairs and you are given the position of B. B is sitting here. Now A and C की position given नहीं है, so we'll look at the different possibilities. Now first of all, if it is given that A is sitting between B and C, तो इससे आपको अज्यूम नहीं करना है कि A will be the only person who is sitting between B and C. ठीक है? A is one of the person who is sitting between B and C. B और C के बीच में और भी कोई बैठा हो सकता है, राइट? तो अगर मैं इस चीज को इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, A is sitting here and C is sitting here, तो yes, I can say that A is sitting between B and C. राइट? बी और सी के बीच में और कोई भी बैठ सकता है, बट दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. ठीक है? सिमिलरली ऑन द अदर साइड आई कैन से दैट अगर ए यहां पे बैठा है एंड सी यहां पे बैठा है, तो यस, इट मींस ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी. सो ए कैन बी अ पर्सन, एनीवन between sitting B and C, not the only person sitting between B and C, right? अब इस चीज को समझने के बाद
if I'll say that I have to find out the possible positions where C can sit. तो सबसे पहले since A, B और C के बीच में होना चाहिए, C cannot sit at either of these chairs. C chair number 3 पे नहीं बैठ सकता और chair number 5 पे नहीं बैठ सकता. ओके तो B और C एडजेसेंट नहीं होने चाहिए बिकॉज A कम से कम एक पर्सन तो है ना इनके बीच में, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी C के लिए. ऑल्सो फॉर A कहां कहां नहीं बैठ सकता ये क्लैरिटी है. A कैन नॉट सिट एट चेयर नंबर 1 और चेयर नंबर 9. A 1 और 9 पे नहीं बैठ सकता बिकॉज दीज आर द एक्सट्रीम चेयर्स. A को B और C के बीच में होना चाहिए. तो अगर A चेयर नंबर 1 पे बैठ जाएगा तो C के लिए कोई चेयर ऑब्टेन नहीं हो पाएगी. ऑलराइट, ठीक है. नाउ एडिशनली अगर बोला हुआ है ओनली A इज सिटिंग बिटवीन B एंड C, ओके, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सिर्फ A होना चाहिए तो A यहां पे, C यहां पे और A यहां पे, C यहां पे. सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बिकॉज ओनली A इज सिटिंग बिटवीन B एंड C. Right? So you will have to be careful if it is A is sitting between B and C या फिर only A is sitting between B and C. तो अभी जो हम फर्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी, right? What is the meaning of A is sitting between B and C? Okay? So taking care of these basic things, you will have to make the arrangement. Okay? So let's have a look at one of such questions. Okay, so example is in front of you. I'll give you few seconds to read this question and then we'll start with the discussion and we'll draw the possible arrangement and we'll answer this question. ठीक है? So have a look at this question, spend few seconds, at least read तो कर लो इसे and then we'll start with the arrangement, the different possibilities. Now 6 persons are sitting in a row. They are A, B, C, D, E, F. C is not sitting besides D. अब C is not sitting beside D मतलब C D के साथ नहीं बैठा है. D who is sitting on the extreme right. D extreme right पे बैठा है तो D की पोजीशन पता लग गई है. E is between A and C. A is not sitting beside F and D. B is between F and D, and then you are asked who is immediate right of A. Okay, so let's draw this arrangement. So first of all, there are 6 people sitting. Okay, so I'll draw 6 chairs. Okay, let me number these chairs: 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now this is the extreme right hand side, and this is the extreme left hand side. Okay, right? Now C is not sitting beside D. C D के साथ नहीं बैठा. D who is sitting on the extreme right. तो D का position fix हो गया है extreme right. So I'll place D at chair number 6. Now C cannot sit with D. तो C cannot sit at chair number 5. C यहाँ पे नहीं बैठ सकता. Okay? Now E is between A and C. Now E अगर A और C के बीच में है तो ओनली नहीं लिखा ना यहाँ पे, तो E के अलावा और कोई भी हो सकता है. इट कैन बी A, E, C और इट कैन बी C, E, A इन दिस सीक्वेंस. हमें ये भी तो नहीं पता ना A और C में से कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, बिकॉज A और C की पोजीशन यहाँ पे तो क्लियर नहीं है. तो A, E, C इस ऑर्डर में हो सकता है और C, E, A इस ऑर्डर में हो सकता है. एंड A और C के बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं. डन, ठीक है. हाँ, A और C के बीच में E तो होना चाहिए और इनके अलावा कितने भी लोग हो सकते हैं. दिस इज वन थिंग दैट इज क्लियर. नाउ A इज नॉट सिटिंग बिसाइड F एंड D. A जो है D और F के साथ नहीं बैठा है, इसको हम दिमाग में रखेंगे. A इज नॉट सिटिंग बिसाइड F एंड D. ठीक है. नेक्स्ट B इज सिटिंग बिटवीन F एंड D. B F और D के बीच में है तो D तो पता है, तो B 5 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है.
किसी भी एक चेयर पे हो सकता है, 1 पे नहीं हो सकता बी. सो बी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी. ऑर्डर यही होगा, एफ और डी के बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं, बिकॉज डी तो एक्सट्रीम राइट पे है ना, तो ये वाला ऑर्डर नहीं हो सकता. दिस ऑर्डर कैन नॉट बी पॉसिबल. ओके, राइट? सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस. ओके, नाउ यूजिंग दीज कंडीशंस लेट्स मेक let's make all the other people sit. डी तो पता है कहां पे है. अब बी के लिए अजम्पशन लेते हैं, बी कहां कहां बैठ सकता है. तो अगर मैं बी को इधर बिठा देता हूं तो एफ इधर आ जाएगा, राइट? ए ई सी और सी ई ए इन 3 चेयर्स पे आएंगे ना. ए ई सी और सी ई ए, राइट? चेयर नंबर 5 पे सी या ए में से कोई ना कोई एक बैठेगा, राइट? ओके, सो अगर मैं इस तरीके से बिठाता हूं A, E, C, right? A is not sitting beside F and D, right? So can I say that this is a possible arrangement where B will sit here and F will sit here, right? So this is one of the possible arrangements, right? Okay, now does it satisfy all the condition? C is not sitting beside D. C जो है चेयर नंबर 5 पे नहीं होना चाहिए, तो ये वाला अरेंजमेंट नहीं हो सकता. अगर मैं ए और सी की पोजीशन इंटरचेंज कर देता हूं तो ए डी के साथ नहीं होना चाहिए. फाइन. सो इन एनी केस ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो दैट मींस बी चेयर नंबर 2 पे नहीं बैठ सकता. ओके, बी चेयर नंबर 2 पे नहीं बैठ सकता, तो मेरी अजम्पशन ही रॉन्ग थी. इन सबको हटा देता हूं मैं, एंड देन आई विल अज्यूम दैट बी सिटिंग एट चेयर नंबर 3. अगर B यहां पे बैठेगा, अब एक चीज देखो, B अगर यहां पे है तो F इन दोनों में से एक चेयर पे होगा. ओके, राइट? F अगर इन दोनों एक चेयर्स में से होगा तो A और C में से एक पर्सन यहां पे होगा और एक पर्सन F के साथ होगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, राइट? अगर मैं B को यहां पे बिठाता हूं तो A और C में से एक पर्सन यहां पे होगा, F यहां पे आएगा. ओके, ड्रॉ करके देख लेते हैं. सो इफ आई मेक बी सिट एट दिस प्लेस, बी को अगर मैं यहां पे बिठाता हूं, देन ए और सी में से एक पर्सन यहां पे आएगा एंड एफ इन 3 चेयर्स में से कहीं ना कहीं एक पे आएगा. ओके, नाउ वेयर एवर एफ विल कम, अगर एफ को मैं यहां पे बिठा देता हूं तो ई इधर आएगा, राइट? एंड ए या सी तो यहां पे नहीं बैठ सकता, तो सी को यहां पे बैठना पड़ेगा एंड ए को यहां पे बैठना पड़ेगा. सी बैठ नहीं सकता, ए को यहां बैठना पड़ेगा, तो डी के साथ ए नहीं हो सकता. सो अगेन प्रॉब्लम. सो बी कैन नॉट सिट एट चेयर नंबर 4. द ओनली प्लेस फॉर बी के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बचती है, दैट इज चेयर नंबर 5. ओके, सो यूजिंग दिस एग्जाम्पल यू हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबिलिटी दैट मे हैपन. तो बी को मुझे यहां पे बिठाना पड़ेगा, राइट? अब B को अगर मैंने यहां पे बिठा दिया, अब F कहां कहां बैठ सकता है? सो F कैन सिट हेयर. ओके, F अगर यहां पे बैठ गया तो ए ई सी सी ई ए, ए ई सी सी ई ए, ए जो है F और D के साथ नहीं बैठना चाहिए, तो यहां पे C E A. कैन आई राइट इट लाइक दिस? C E A. सो C is not sitting beside D. Perfect. D, fine. E is between A and C. Okay. A is not sitting beside F and D. A F और D के साथ नहीं बैठा. B is sitting between F and D. तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर मैं F को यहां पे बिठाता हूं. Now, can there be any other possibility? So यहाँ पे अब multiple possibilities arise हो सकती हैं. Okay. So C is not sitting beside D. C is not sitting beside D. E is between A and C. A is not sitting beside F and D, ये भी ट्रू है, एंड B is between F and D, ये भी ट्रू है. Now अगर मैं F को चेयर नंबर 2 पे बिठाता हूं एंड D यहां पे है और B यहां पे है, राइट? सो A E C और C E A, A जो है F और D के साथ नहीं बैठ सकता, तो A को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा. E will sit here and C will sit here. Okay,
right? So E is between A and C. Again, this is a possibility, right? So in any arrangement, there can be multiple possibilities that may arise in front of you. You will have to make all those cases, and then depending upon these cases, you will have to answer these questions. All right. So this is the first example. Now, who is sitting immediate right of A? Now, immediate right of A, you will see that there is only one possibility, is B. B हमेशा immediate right of A होगा. So option A, that is B, will always be correct. Okay, clear? So this will be the correct answer. Even if you will have multiple possibilities, answer will be a unique answer. Okay, chaliye. Now let's move on and look at one more example. All of you, one more example. In a class, there are 5 students A, B, C, D, E who sit on one bench. B and D are close friends and they are always sitting together but not at corners. E and C are as far as possible. A is friend of C and sit to the right of C and to the immediate left of B. Quickly draw this arrangement. Quickly, all of you draw this arrangement and then we'll have a look at it. Okay, now with this, I'll also display the questions and try to answer these 3 questions. Who is in the middle? Who sits in the leftmost corner? And which of the following is the correct position of D as in the given options? All right, now let's try to draw this arrangement. This one is easier as compared to the previous example that we have seen. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 friends. Now B and D are close friends and they will always sit together but not at corners. So B और D के लिए सिर्फ यही 3 positions हो सकती हैं. Corners पे B और D नहीं बैठेंगे और इनको एक साथ बैठना पड़ेगा. BD और DB. Anyone like this? Second condition, E and C are as far as possible. अब E और C को as far as possible करना है तो उनको extreme corners पे बिठाना चाहिए. So E और C, मुझे नहीं पता ना लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, C और E, राइट? सो कॉर्नर्स E और C के लिए रिजर्व हो चुके हैं. थर्ड स्टेटमेंट, A is a friend of C and sits to the right of C. ना C के राइट में कोई ना कोई होना चाहिए. So if C will sit at the rightmost corner, C के राइट में कोई होगा ही नहीं, तो that means C को कहां बैठना पड़ेगा? Leftmost corner. Okay? So C will sit at the first chair and E will sit at the rightmost chair. Okay? So A is a friend of C and sits to the right of C. तो A यहां पे कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, B और D को एक साथ होना चाहिए. Now C and E are already placed. B और D के लिए मुझे 2 adjacent एक साथ वाली positions चाहिए. तो A यहां बीच में तो बैठ नहीं सकता, तो A या तो इधर बैठेगा या फिर इधर बैठेगा. ओके, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो मैं इन दोनों पॉसिबिलिटी को एक एक करके ड्रॉ कर देता हूं, एक के नीचे एक. सो अगर A यहां बैठेगा या फिर A यहां बैठेगा. डन. A is a friend of C and sits to the right of C and to the immediate left of B. Now A is sitting to the immediate left of B. अगर A यहां पे बैठेगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो this possibility will not be there and B will sit here so that D will sit here. Okay? So now A is a friend of C and sits to the right of C. Right of C है, मैंने immediate right consider नहीं किया था. I have kept both the possibilities open
and A is to the immediate left of B, A is to the immediate left of B. This arrangement is the correct arrangement. Okay, now looking at the questions, who sits in the middle? Middle में कौन बैठा है? B. Who sits to the leftmost corner? Leftmost corner में कौन बैठा है? C. And which of the following is the correct position of D? D का correct position क्या है? Is it between A and B? A और B के बीच में तो possible नहीं है. There is no one. Immediate left of B. So immediate left of B. No, it is A. Wrong. Immediate left of E. Immediate left of E is D. Yes. So third option is the correct option. All right. That's it. This was example number 2. Okay. Now let's move on and look at the basics of distribution, our next topic. Now basics इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा basics में. मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. So distribution में आपको एक टेबल फॉर्म करना होता है. Basically you have like different parameters. Let's say the name of the person, the city of the person, the car that the person drives, the company in which the person works. इस टाइप के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं एंड अलग अलग कंडीशंस होती हैं. लेट्स से A works in Accenture but does not live in Bangalore. ठीक है, तो ये वाली इस टाइप की कंडीशंस को यूज करके हमें पूरा का पूरा टेबल फॉर्म करना होता है एंड देन विल हैव टू आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो बेसिक्स की जगह हम सीधा एक एग्जांपल देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे. Okay, an appropriate question, एक example देखते हैं. So these are the conditions which are given to you. Using these conditions, you will have to draw a table. So I'll give you 2 minutes for doing this. Come on, go ahead, and then we'll have a proper discussion on this. So this question is telling us that there are 5 people A, B, C, D, E who live in 5 different cities: Delhi, Mumbai, Pune, Kolkata, Chandigarh, and they drive 5 different cars, namely Creta, Safari, Baleno, Innova, and Polo. Some more information is given about them, using which you can form a table. अब एक टेबल इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना. ओके, अब टेबल किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? First of all, there are 3 parameters: name, city and the car. ठीक है, 3 parameters है. So टेबल में 3 columns फिक्स कर देते हैं. So column 1, column 2 and column 3. Okay, so यहाँ पे name, city and car. Right? Now, out of these 3 parameters, you can fix one of the parameters. Name को हम fix कर देते हैं. So name A, B, C, D and E. All right. And ये जो नीचे की थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा स्पेस खाली छोड़ दो. Possibly, if we don't have the name, we have the city and the car, we should be able to use this extra space for the rough work, right? चलिए, अब let's populate this table. एक एक करके conditions read करेंगे. A lives in Pune, so A lives in Pune, and C drives Safari. Okay, Pune and Safari gone. The one who drives Baleno lives in Kolkata. अब मुझे पता नहीं वो कौन पर्सन है, बट बलेनो कोलकाता के साथ होनी चाहिए. सो व्हेन सिटी इज कोलकाता, द कार इज बलिनो. ओके, ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो गया ना, राइट? सो दिस इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू टू कीप दिस एक्स्ट्रा स्पेस एट द बॉटम. नेक्स्ट स्टेटमेंट, डी ड्राइव्स क्रेटा. डी ड्राइव्स क्रेटा, ऑलराइट, बट डज नॉट लिव इन चंडीगढ़. ये चंडीगढ़ में नहीं रहता.
and E lives in Mumbai. E lives in Mumbai. All right. Now that's it. This is the total number of conditions that are given to us. इतना ही पता है. अब एक एक करके चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोलकाता बलिनो का कॉम्बिनेशन कहां पे आ सकता है. It cannot be A because A lives in Pune. It cannot be C because C drives Safari. It cannot be D because D क्रेटा ड्राइव करता है, और E भी नहीं हो सकता because E मुंबई में रहता है. तो एक ही स्पेस खाली है इसके लिए. B will live in Kolkata and will drive Baleno. ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं B कोलकाता एंड बलेनो. राइट, तो ये वाली कंडीशन यूज हो चुकी है. डन. नाउ लुकिंग एट सिटीज, पुणे, कोलकाता एंड मुंबई आर फिक्स्ड. 3 सिटी फिल हो चुकी हैं, 2 सिटी बची है, दिल्ली एंड चंडीगढ़. अब डी चंडीगढ़ में नहीं रह सकता, तो हु विल लिव इन चंडीगढ़? ऑब्वियसली सी, एक ही ऑप्शन है, तो चंडीगढ़ यहां पे आ जाएगा. एंड डी के लिए एक ही सिटी बचेगी विच इज दिल्ली, सो दिल्ली यहां पे आ जाएगी. Done. Cities are completed. Now talking about the cars, we don't have any other information. Baleno, Safari and Creta. Baleno, Safari and Creta, these 3 cars are already gone. Now I'm left with Innova and Polo. Now we don't have any specific information about them. So there may be 2 possibilities, A and E. So A अगर Innova drive करेगा तो E will drive Polo, right? And vice versa. पोलो, इनोवा. राइट, सो यहां पे कार्स के लिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. पोलो, इनोवा कैन इंटरचेंज द प्लेसेस. वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस. ओके, नाउ इफ आई लुक एट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, द वन हु लिव्स इन दिल्ली ड्राइव्स व्हिच कार. जो दिल्ली में रहता है वो कौन सी कार ड्राइव करता है? दिल्ली में डी रहता है और उसकी कार कौन सी है? क्रेटा. तो आंसर विल बी क्रेटा. ओके, ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. मैंने यहां पे ऑप्शंस नहीं बनाए. ठीक है. नेक्स्ट इज हु ड्राइव्स इनोवा. इनोवा कौन ड्राइव करता है? सो इट कैन बी आइदर ए और ई. तो ऑप्शंस में अगर आपके पास आता है ए और ई तो आप वो वाला ऑप्शन मार्क कर सकते हो. अदरवाइज इट विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है ना, मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता यूनिकली कौन ड्राइव कर रहा है. So it is either A or E. So depending upon the options, once again, you will mark the correct answer. Okay. So this is the thing on distribution. All right, people. Now let's shift our focus to the next thing, number and letter series, जहां से बहुत सारे questions आते हैं. Right. So from this area, you may find 3 to 4 questions in the exam. Okay. In an exam जहां पे 30-35 questions हैं total. And there are more than 15 topics. वहां पे इस पर्टिकुलर एरिया से अगर आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो yes, this topic becomes very important. Okay. Now number and letter series में like if you want to solve the questions, you will have a better understanding, a good understanding of first of all different types of numbers. अब यहाँ पे different type of numbers में क्या क्या आ जाते हैं? Okay. So first of all even and odd numbers. Okay, even and odd numbers. Secondly, prime and composite numbers. Mathematics है ये सब. ठीक है. Third, perfect squares and perfect cubes. All right. So ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए. इवन ऑड नंबर्स, प्राइम कॉम्पोजिट नंबर्स. तो प्राइम कॉम्पोजिट नंबर्स 100 तक के प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा सारे इनफाइनाइट तक प्राइम नंबर्स पता हो, 100 तक पता हो अच्छा है. स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स एंड क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, ये पता होने चाहिए. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट थिंग इन अल्फाबेटिकल सीरीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज the number equivalent of the alphabets. इसका मतलब क्या है? A corresponds to 1, B is the second alphabet, C is the third alphabet, D is 4, and so on up till Z, which is the last alphabet, number 26.
तो प्रैक्टिस के साथ ये जो नंबर इक्विवेलेंस ऑफ अल्फाबेट्स हैं ये याद हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, यू विल अंडरस्टैंड इट इन द क्वेश्चंस, ओके। अब क्वेश्चंस जनरली यहाँ पे दो टाइप के आते हैं, कंप्लीटिंग द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना, हम देखेंगे काफी सारे एग्जांपल्स आज, एंड डिटरमाइनिंग द रॉन्ग वर्ड और द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, ठीक है। ऑड वन आउट भी आ सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल completing the series. So some set of numbers or alphabets will be given and जो भी पैटर्न आप ऑब्जर्व करो उस पैटर्न को फॉलो करके आपको नेक्स्ट नंबर और अल्फाबेट फाइंड आउट करना है। अब ये पैटर्न क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी एडिशन, राइट, सो सेम नंबर और different numbers which are forming a pattern, right, are being added. So एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 20, 21, 23, 26, 30. What will be the next number? अब यहां पे पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, तो अब क्या होना चाहिए, 5 ऐड होना चाहिए, एंड द आंसर शुड बी 35, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं ये एक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं, राइट। दिस सीरीज कैन बी एनीथिंग, ये प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं, परफेक्ट क्यूब्स हो सकते हैं, ठीक। सो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होंगे, आपको ऑब्जर्वेशन के साथ उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, डिटरमाइन करना है, एंड वंस यू आर लाइक एबल टू डिटरमाइन दिस पैटर्न, ओवर, गेम ओवर, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विल हैपन विद अल्फाबेटिकल सीरीज, okay, so let's look at a few examples of both of them, okay। So next question on your screen, so you'll have to complete this series. Numbers are 7, 8, 11, 16, 23. बहुत simple example दिया है मैंने, try to find out the answer and post your answer, A, B, C या D, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। Okay, so if I'll write these numbers, so 7, 8, 11, 16 and 23. Now यहाँ पे difference कितना है, 1 का, so +1, then +3, +5, +7. So 1, 3, 5, 7, these are odd numbers. So next odd number क्या हो जाएगा, it should be +9. 23 +9, it is 32. So 32 will be the correct answer, that is option C, okay। Let's move on, look at the next example, a similar one. Carefully observe these numbers and determine the correct answer. Options are given, just post your answer, A, B, C or D. Simple question, right? So 19 plus 5 is 24. 24 plus 10 is 34. 34 plus 15 is 49. And then plus 20. So plus 5 plus 10 plus 15 plus 20. 5 के multiples add हो रहे हैं, successive multiples of 5. So next should be plus 25. 69 plus 25 is 94. So 94, that is again option C is the correct answer. All right, ठीक है। Now next question, question number 6. 3, 12, 27, 48, 75 and 108.
ऑलराइट, नाइस, गुड, कीप इट अप, जल्दी से आंसर्स दो. सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? प्लस 9, 9 is being added to 3. Now 12 से 27 पे जाना है तो 15 ऐड हो रहा है, ठीक है. देन 27 से 48 पे जाना है तो 21 का डिफरेंस है. सो 27 प्लस 21 is 48. देन आफ्टर दैट 27, देन आफ्टर दैट 33. ओके, अब एक चीज अगर ऑब्जर्व करोगे, ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने नीचे 9, 15, 21, 27, 33, इनमें गैप कितने का है? 6 का गैप है. तो 9 प्लस 6 is 15, 15 प्लस 6 is 21, 21 प्लस 6 is 27, 27 प्लस 6 is 33. सो 33 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 33 प्लस 6 is 39. So our next number in the series that will follow will be obtained if 39 is added to 108. 108 में 39 add कर दो, answer will be 147. So 147 option A is the correct answer. सही है, ठीक है, perfect. Now next, alphabetical series. So some alphabets are given in groups. You will have to find out the next group of alphabets. Again, I'll give you some time, 45 seconds to 1 minute. Now, how you can determine the answer for this? जितने भी अल्फाबेट्स गिवन हैं उनको अगर उनके नंबर इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत इजी हो जाएगा. ओके, ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ दीज ऑप्शंस इज स्टार्टिंग विद अ डिफरेंट अल्फाबेट. तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर लो, G, H, J, M एंड Q. सो G, H, J, M and Q. Let's write their number equivalents. So G is 7, 8, 10, 13 and 17. मुझे याद है, ठीक है, मैं it's been 18 years I've been teaching, तो ये सारी चीजें तो याद हो जाती हैं प्रैक्टिस से. अब हो क्या रहा है? +1, +2, +3 एंड +4. तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी +5. 17 + 5 कितना होता है? 22. एंड 22 का अल्फाबेट इक्विवेलेंट होता है V. सो वट एवर द आंसर इज, इसका फर्स्ट अल्फाबेट V होना चाहिए. अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो आपको सेकेंड पार्ट भी चेक करना पड़ेगा, बट अभी चेक करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट. Now next example, example 8, W, S, Q, M. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, but I'm sure some of you will be able to determine the answer. But first of all, करना क्या है? First step should be convert all these alphabets into their number equivalents. तो आसान हो जाएगा, observation easy हो जाएगी. लेट्स सी कौन आंसर दे सकता है इसका. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो WSQM. चलिए मैं नंबर इक्विवेलेंस लिख रहा हूं. 23, 19, 17 एंड 13. सो ऐसा कोई पैटर्न तो फॉलो हो नहीं रहा, ठीक है. नाउ वन थिंग दैट यू ऑल कैन ऑब्जर्व, ठीक है, शायद एक तुक्के से आंसर आ जाए. यहां पे आप बोलो -4, देन -2, देन -4, तो नेक्स्ट -2 होना चाहिए. बट -4, -2, -4 के बाद -1 भी तो हो सकता है. जरूरी नहीं है ना सेम पैटर्न विल रिपीट. एटलीस्ट 2 या 3 टाइम रिपीट होना चाहिए, तभी मैं उस पैटर्न को
जनरलाइज कर सकता हूं. The more accurate logic for this one will be these are prime numbers in decreasing order. 23 से पहले प्राइम नंबर आता है 19, 19 से नीचे प्राइम नंबर होता है 17, 17 से नीचे 13 होता है और कोई नहीं होते. So 13 के नीचे next prime number will be 11 and 11 के corresponding, yes, absolutely. So 11 is K. So option C is the correct answer of this one, right? ठीक है. So K is the correct answer because it is 11. अगर आप -4 -2 -4 -2 लगाओगे तो भी सेम आंसर आ रहा है, but that is not I would say the appropriate logic that should be applied here, right? ठीक है. So friends, that is all about this lecture. A big thank you to all of you for being a part of this session, and I hope जो अभी हमारा जो बेसिकली एम है प्री फाउंडेशन में, which is basically getting you equipped with the basics of logical reasoning and data interpretation, and for that matter quant and verbal RC as well. I hope you all are taking 100% advantage of these sessions, right? So that's all from my side for this session. I'll see you in the next session wherein we'll be discussing some of the important facts, the basics, and some questions related to data interpretation. Till then, have a wonderful time. Bye-bye.